So now I want to ask you, when you are treating the patient, first definitely you'll be doing the consultation. आप पहले consultation करते होंगे, right? Because when we're in the clinic, first step is consultation. Okay. And consultation play very important role. Why? Number one, we are, with the consultation, we are able to find out the problems happening with the patient in the very detail. हम patient की problem को detail में find out कर पाते हैं with the help of consultation, right? अगर आप लोग म्यूट करके रखेंगे नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट करूंगा. No one able to speak. Those who are discussing, please mute yourself. Okay. तो देखिए, पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मेनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट. Okay. So, how many person has that consultation sheet, letter pad? कितने लोगों ने कंसल्टेशन पैड बनाया, मतलब जिसमें आपका नाम है ना? इट्स हैविंग द नेम ऑफ योर सेंटर और द क्लिनिक. Like I have my center name, Spine Care Center. So Spine Care Center, my name is Dr. Hemant Sharma. And patient name. How many person having the consultation like a pad, letter pad? Sub nahi. Because sometimes, okay, fine. In the consultation pad, we have our phone number, we have our address. Okay. Fine. So let's discuss some. मैं आपको एक rough idea दे रहा हूँ. You can make your consultation paper. It's very cheap. Like if you print out within the very minimum amount, you can print the consultation paper, right? So when the patient visiting you first time, जब patient आपके पास पहली बार आता है, that is a very important day, because patient can come from mouth to mouth publicity, right? Oh, you have treated one of my colleague, he got very good benefit. Now I have come. This patient is very easy because you don't have to convince a lot, because patient is already having good rapport about you in the mind, in his mind. But another patient coming directly to you, maybe by the marketing, maybe by the Facebook, Instagram, or your some banner, pamphlets, just looking the name of your center and coming directly to your clinic. Kuch patient direct aage. They don't have your rapport in their mind. Maybe you are a very famous doctor. Maybe you are traveling throughout the world, but for him, it is not better because he doesn't know about you, right? Then the consultation play a very important role to create the rapport in the patient mind. During the consultation, we should not do few mistakes. हमें कुछ mistake नहीं करना चाहिए. The mistake number one, patient coming to you, doctor, I'm suffering with a lower back pain. Oh, no problem, 100% cure come. And immediately you're starting the treatment. That is absolutely wrong. Okay. Maybe you are very expert in the back pain treatment. आप बहुत expert हैं. आपने सुना, wow, I can treat this disease successfully because I am expert. Definitely you might be expert. But it will create negative rapport in the patient mind, because patient will tell you, I have visited too many doctors. Even I have visited super senior MD, MS in the very big hospital. They told that this disease is very difficult to treat, and they have done lots of reports, X-ray, MRI, and the patient is having some complicated thing in the mind.
And you are then second thing, this doctor is not, this doctor or acupuncturist is not investigating me, not seeing my area. इसने ना तो हाथ लगा के देखा कि मुझे कहाँ दर्द है, ना इसने मुझसे कुछ पूछा, ना मेरी कोई हिस्ट्री ली, और डायरेक्ट मुझे टेबल, मतलब पेशेंट माइट आस्क यू कि डॉक्टर आपने कुछ चेक नहीं किया, मेरी नाड़ी चेक नहीं की, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं पूछी. So this will quickly create the negative rapport in the patient mind. A patient is coming directly, right, without referring to another patient. अगर किसी improved patient ने refer किया, then no problem. Otherwise, you have to, every time you have to create your rapport in front of the patient. Otherwise, what will happen? Patient might take the treatment on that day, but repetition might be difficult. So the step number one, even before the cupping therapy, we do consultation and we write date-wise treatment that today we have done the treatment on the 13th May, and the next treatment of cupping therapy will do maybe after 7 days. So we have to maintain the record. Okay. So the step number one, when patient coming to you, first you have to take the proper history. So we can move in that way. You can update. This is just a very rough thing, a rough idea. You can, so your center name like Spine Care Center and address, and even you can write the phone number here, email here, your name, Dr. Hemant Kumar Sharma, your degree or your achievements, like you have done something from here and there. Okay. If you are having a registration number, then registration number here. Then you have to ask the patient information. I will share this PDF to you for your idea. So page number 1, then the page number 2, then the page number 3, then the page number 4. Even you can update little more. आप इसे और भी update कर सकते हैं. But this is, I am giving you idea. So number 1, high blood pressure. You have to tick if the person is having high BP. पहले आपने पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, मेल और फीमेल, प्रोफेशन, बॉडी टू, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी प्रोफेशनल है, फोटोग्राफर है, उसका वेट कितना. यू शुड हैव वेट मशीन इन अ क्लिनिक. आपके क्लिनिक में हाइट मेजरमेंट का भी होना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग द थेरेपी जिसमें हाइट इंक्रीज और डिक्रीज, हाइट भी इंक्रीज होती है. वेदर पेशेंट इज नॉट कमिंग फॉर द हाइट, but if you measure the height and you tell the patient, oh, your height is increasing, patient will be very happy. Okay, maybe patient, because we are doing the proper alignment of the spine, we are doing proper alignment of the whole body. Suppose someone is having forward neck or kyphosis, head is decreasing, but as we do the treatment, kyphosis clear, forward neck clear, then head is increasing. तो हम इस तरह से जब पेशेंट को बताते हैं, your height is increasing. Why your height is increasing? Because your posture is moving toward the balance state. आपका posture balance की ओर जा रहा है. So in this condition, in this way, we have to take the height and phone number, then the registration number. Every patient having registration number. It is also mandatory, so that if you are maintaining the proper data, sometime you buy some software. The price of the software also 3,000, 4,000 or 5,000. If you're having good patient, then you can take one software. I don't think the 1 year price more than 6,000-7,000 for buying the software to maintain the patient data. Okay. लेकिन अगर आपके पास number of patient है तो आप कर सकते हैं, otherwise manual is okay. So initially you can go manually only. Write the registration number of the patient. Okay, so that suppose here I'm writing 001 or 002 in this way. Then checkup date, patient came today 13 May 2024. Okay, so profession repeated, so we can remove it. Profession, okay, weight, height repeated, we can remove from here. And ये डबल हो गया, इसे हटा सकते हैं, हटा देंगे, या तो इधर से हटा देंगे, इधर से. एडिक्शन, पेशेंट इज टेकिंग, डूइंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको एंड अदर. इंडिया में तो हम ये पूछते हैं, डू यू स्मोक, डू यू ईट टोबैको, है ना. बट इफ यू गो सम अदर कंट्रीज लाइक यू आर गोइंग मालदीव, then do you take drugs,
For them, smoking and drinking, like eating the biscuit and tea, right? तो smoking very like smoking जो है ना LKG है. Drinking also class 1. Drug is something very challenging in many countries like Maldives and some other countries. They take drugs. In India also, many people take the drugs, especially in metro country, metro cities and all. तो patient आपको अगर आप पूछेंगे, do you smoke, do you take tobacco, or do you drink? Patient will tell you, yes, I'm having. Patient is retired army person, might be taking little alcohol every day. जो लोग आर्मी से रिटायर होके आते हैं, थोड़ी थोड़ी अल्कोहल हर रोज लेते हैं. Few people are addicted. Then we have to think about, okay, so we always have to ask. Never sigh whether a female patient is coming. One female patient came to me. She was only 22 years. एक 22 साल की female आई. She was very beautiful and good posture, good physique. Skin was shining. I thought, यार ये look like आदर्श नारी. I thought एक होता है ना हमारे इंडिया, एक हमारे मेल के माइंड में, यार क्या आदर्श नारी लग रही है, इसको थोड़ा सा तिलक बिलक लगा दो, है ना. और बस every male want wife like this female only. Then I generally ask, okay, do you have any addiction? Yes, I'm heavy drinker. I'm heavy drinker. So other scenario immediately gone, like heavy drinker. So that's why I came to you. उसने कहा I take heavy drink, मैं बहुत drink करती हूँ, because I am having a stressful lifestyle, and initially I just started the drink occasionally, but now I am addicted. तो पूछना जरूरी है, because if you drink more, then definitely there is a liver fire generation and liver heat rising, and it will create some other problems. Ask the history frankly. Do you drink or do you have any addiction, whether the male or the female? You can ask, because our duty to ask everything. We can't, don't judge the book by its cover. You have, आपने कहावत सुनी होगी कि don't judge the book by its cover. कभी किताब का कवर देख के मत पहचानना कि इसके अंदर क्या है. Okay. So don't judge any person by just looking the person. Okay, that is also in the TCM we are doing diagnosis. That is a different thing. We are doing face diagnosis, we are doing posture diagnosis, we are doing diagnosis of everything. लेकिन किसी व्यक्ति को सिर्फ बाहर से देखकर जज मत कर लेना, है ना. So don't judge the books by its cover. Maybe inside something different. तो पूछिए, history लीजिए. That's why in the Ayurveda it has been told, darshanam, prashnam, sparshanam. First you see the patient, how it walk, how the patient entering in a clinic, whether posture is correct, whether gait means correct. Gait means patient is walking properly. Then prashnam, ask many questions. Ask many questions. Okay, so we are having the list of the many questions. Then sparshanam, then touch. तो पहले देख लिया, प्रश्न पूछ लिया, अब उसे टच करिए, उसकी नाड़ी देखिए या उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करिए. Now you touch the patient. You see why many things we can see, why the touch, why the nadi, why the pulse, why touching the scalp, why touching the feet. So you can do that. If you touch and person is cold, means circulation is not proper. अगर आपने किसी पेशेंट को टच किया और उसकी शरीर ठंडा है तो सर्कुलेशन ठीक नहीं है. So in this way, then we are asking, we are checking the blood pressure. We are asking and even checking the blood pressure. We are asking whether you suffer with the high blood pressure, the low blood pressure. So in the low BP, we are a little more careful in the low BP, because after the cupping therapy, due to the dilatation of the blood vessels, sometimes BP go down. जब हम cupping करते हैं तो BP और कम हो सकता है, तो थोड़ा सा संभाल के करते तब भी है. But make sure you are not doing empty stomach. की patient सुबह से कुछ नहीं खाया, आपके पास 1 बजे आया, अभी भूख लग रही है उसे, उस समय मत करिए. Don't do the cupping when the patient is very hungry. It might create some complication.
The patient asks the history. Patient is having high blood pressure, low blood sugar, allergies, lung problem, any heart or the cardiovascular problem, obesity, and we can write the weight here. The history of epilepsy. ये जो epileptic के पेशेंट होते हैं इनके लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है. Sometimes if we do the wrong treatment, they might get some epileptic episode on the table. Then person is having sensitivity to heat or the cold. Person is tired, having headache, so or pain anywhere, shoulder pain, elbow pain, wrist pain, finger pain, कि कहीं दर्द है, और भी upper back pain, middle back pain, lower back pain, leg pain, knee pain, lower leg pain, foot pain. Ask all the pain one by one. Why we are asking this pain? Patient will tell you after maybe 2 cupping session, doctor, 2 treatment or 3-4 treatment, doctor, I don't have any benefit. Then we take the consultation paper out. Oh, leg pain is there, upper back pain is there, middle back pain is there, lower back pain is there. Oh, do you suffer with upper back pain, middle back pain, lower back pain, leg pain? Patient will say, no, I'm not suffering. So patient told you 10 problems earlier. Now only 2 problems or 3 problems remaining. Okay, so patient is telling I'm not getting benefit in these 2-3 problems. Now patient will realize, yes, my 7th problem disappeared, because patient is forgetting. जब भी पेशेंट की कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है उसको भूल जाता है, उसकी गलती भी नहीं मान सकते, ही फॉरगेट. सो वी हैव टू मेंटेन द डाटा. फिर हम पेशेंट को बोलेंगे देखो आपको अपर मिडिल लोअर बैक पेन था, ठीक हो गया ना? यस यस यस, ठीक हो गया. Then it will make your rapport. Otherwise, in front of your 10 patient, when he will tell you that I'm not getting any benefit, you will not feel good. The person is having any prostate problem, and the female, oh, so this is the general question. You can add more. आप इसमें और भी जोड़ सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, राइट? तो मुझे जो लगता है वो मैं जनरली, ये वो प्रश्न है जो जनरली आई आस्क to my patient. Okay, quickly I ask all the question and I tick, right? But make sure when we are asking this question, okay, never forget to ask, do you take any medicine? Never forget to ask. Why? हमारा प्रश्न होता है कि आप कोई मेडिसिन लेते हो? क्योंकि पेशेंट ने कहा कि मेरा बीपी नॉर्मल है, but patient is telling you, yes, I take BP medicine. So we have to ask, what are the symptoms you experience? अब आपके लक्षण बताओ, आपको क्या क्या महसूस होता है. पहले हमने पूछ लिया, ये सारी कहानी हमने पूछ ली. अब पेशेंट को बोलेंगे भाई तुम बताओ, क्योंकि पेशेंट की बात भी तो सुनना है जी, है ना? पेशेंट क्या फील, देन ही विल एक्सप्लेन यू, ही माइट एक्सप्लेन टू मेनी प्रॉब्लम्स. इतनी प्रॉब्लम वो एक्सप्लेन करेगा कि आपका कभी कभी एक पेज भर जाएगा. यू कीप ऑन राइटिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. It's very good to write each and every single problem. Don't ignore, okay, this is very little problem, so I'm not writing. No, write everything. What is the benefit to write everything? कि जितनी ज्यादा बीमारियां लिख लोगे आप जो उसको है, बाद में आप गिना सकते हो, देखो ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम, right? And this is, ऐसा नहीं कि we are trying to prove us. We are just trying to convince the patient that you are on the right path, you are getting benefit. क्योंकि हमारे पास 3 तरह के पेशेंट आते हैं. 3 type of patient. Number 1 patient, even they will always praise you, they are having 100% faith on you. वो हमेशा आपको प्रेज ही करते रहेंगे, हमेशा. आप थोड़ा करोगे तब भी दुनिया में आपके गीत गाएंगे और आपको खूब प्रेज करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे. The second patient, 50-50. Sometimes they praise, sometimes not. And third patient, वो आपको कभी प्रेज नहीं करेंगे. आप अपना छाती भी फाड़ के निकाल दो ना तो भी प्रेज नहीं करेंगे. They will never praise you. I have encountered many patients, such patient, like one patient came with a complaint of frozen shoulder. After giving only 3-4 treatment, I got depressed.
I thought I don't know acupuncture. Only after giving 3-4 treatment, because I tried everything, but he's not getting benefit. Then after second sitting, he told doctor, if you tell I'm ready to spend money, if you tell we'll go China and please arrange my shoulder pain treatment. उसने कहा कि मुझे चाइना आप लेके चलो, आपका मेरा जाने का रहने का सब खर्चा मैं दूंगा. I was thinking, yeah, I can't get the shoulder pain of this patient. And then after 12 sittings, even on the 12th day, patient told doctor, I don't have any benefit. Then I told, okay, take the break of 20 days. मैं उस पेशेंट को भगाना चाहता था कि भैया अभी तुम ब्रेक ले लो और अभी दिमाग अपना चेहरा मत दिखाना, बहुत दिमाग खराब कर दिया. Then that patient keep on sending other patient to me. I thought patient is not got any benefit. Then why is sending the patient to me? क्यों पेशेंट भेज रहा है मेरे पास? और पेशेंट जो भी पेशेंट मेरे पास आके बोली, डॉक्टर प्लीज डू द ट्रीटमेंट, आई एम हैविंग फुल फेथ ऑन यू. Okay, then that same patient, shoulder pain patient, came to me after 20 days. Then I did some treatment. I thought nothing worked for him. Let me change my treatment. So I did something different. Then patient told me, doctor, why not doing the same treatment you did earlier? I asked, why? But you didn't get any benefit. No. When I told I didn't get any benefit, please do the same treatment. So patient is telling he never preach, right? Then I asked her, why you're not telling true story to me? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की तारीफ करो ना तो वो उसका काम कम हो जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है, तो हम कभी किसी की तारीफ नहीं करते. वो है ना, उसकी दुकान है, उसकी सोना चांदी की दुकान है ना, पार की सुना, कभी नेवर प्रेज एनीवन, दिस इज अवर ट्रेंड, है ना, कि अगर हमने प्रेज किया मतलब हमारा, फिर सामने वाला हम पर ध्यान नहीं देता, तो हम उसको, तो मैंने कहा ये बात तो सच है, मैंने उस पर जितना ध्यान दिया होगा ना, इतना तो मैंने किसी पेशेंट पे ध्यान नहीं दिया भाई. कि रोज आके मेरी बैंड बजाता था, बट ही वाज गेटिंग बेनिफिट, बट ही told me this thing after 40 days. Till the 40 days, I keep on thinking many times, yeah, I couldn't work for this problem. I'm not. So this is happening every time, right? Suppose one patient coming to you and telling, doctor, you just treat my wife, मैं लाइन लगा दूंगा. ऐसे पेशेंट पे कभी भरोसा मत कर, है ना. या तो उसको भगा देना, चल भाग जाए, ऐसे नहीं करना ठीक, या फिर उसको बोलना आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. जो तुम लाइन लगाओगे, आई जस्ट बिकॉज यू केम टू मी, आई विल जस्ट ट्रीट योर वाइफ एंड आई एम नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट whether you send me the patient or not. Tell clearly, frankly. आपके सामने वो दाना फेंकता है, दाना जानते हो, है ना, दाना फेंकता है, उसको सोई मत करो कि हम लालची हैं. Why we should show that we are greedy, we are treating your wife successfully, because after some time you are going to send me lots of patient. No, I don't want any patient. Okay, because if you are good ना, then आप पेशेंट को डंडे मार मार के भगाओगे ना, तब भी आएगा, है ना, if you are good. And if you are not good ना, तो पेशेंट आएगा, रिपीट नहीं करेगा, राइट. सो इन दिस वे, so we have to ask what are the symptoms you are experiencing, when कब लक्षण पहली बार पैदा हुए, when did this, suppose person is telling I'm suffering with a knee pain, okay, कब पहली बार हुआ knee pain, okay, knee pain आपको पहली बार कब चालू हुआ, patient will tell you I got the knee pain 3 years back, 4 years back. Okay, it's very important. क्यों इससे फायदा मिलेगा? Okay, you got knee pain 5 years back, then patient know कि the already having knee pain since the 5 years, then definitely he will give few weeks to us. हमें कुछ weeks तो देगा ना. The person is having knee pain since 5 years will not expect that you will do treatment in 5 days. Okay. Have you experienced similar symptom in the past? पहले भी हुआ था knee pain कभी? Okay. Are you taking any medicines? It's very important. Yes, I am taking medicine for diabetes. भैया अभी तो तूने बोला था डायबिटीज नॉर्मल है, अभी तो बोला था हाई ब्लड प्रेशर नहीं है. Because what patient think, if I'm taking the medicine, then my reading is correct, then I'm not diabetic, I'm not hypertensive. Okay,
Don't do the, so write down was just in your consultation page, आपकी उसमें लिख लीजिए, do you have any allergies? क्या आपको एलर्जी है? Sometimes patient will tell you, yes, I'm having allergy from the alcohol, I'm having allergy from the spirit, I'm having allergy for the Dettol. Don't worry, I will share this PDF to you. आपको मैं ये पूरा PDF शेयर कर देने वाला हूँ जनरल ग्रुप में, तो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू मिस नथिंग। तो एक पेशेंट को मैंने डिटॉल का थोड़ा सा लगाया और उसको एलर्जी हो गई, उसको फूल गया वहां, उसने कहा आई हैव डेटॉल एलर्जी। सो आई टोल्ड व्हाई डिड यू नॉट टेल अर्लियर, आप पहले क्यों नहीं बताया? तो पेशेंट हैविंग एलर्जीज समटाइम, राइट? ओके, डू यू हैव एनी, क्या आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है? डू यू सफर विद सम मेडिकल कंडीशन? डू यू हैव सम किडनी प्रॉब्लम और द लिवर डिसीज, फैटी लिवर, or some stomach ulcer earlier, or some problem with the colon, something? No. Then क्या कभी कोई सर्जरी हुई है? Sometime have you done the surgery? Yes, it's very important because जब भी पेशेंट ने अभी अभी रिसेंट सर्जरी की है, then at many places we can't put the cups. Okay, do you feel any experience any pain or discomfort? कहाँ होता है? अगर दर्द होता है तो कहाँ होता है? डिस्कम्फर्ट होता है तो कहाँ होता है? Okay, do you have you noticed any change in the appetite, weight or sleep pattern? क्या आपका वेट बढ़ा या घटा है? क्या आपकी नींद बढ़ी या घटी है? क्या आपकी भूख कम हो गई है? Whether your appetite increase or decrease, weight is increasing, because if the patient is telling you yes my weight is increasing, maybe patient is moving toward the hypothyroidism. Whether sleep pattern is good or not. So do you have any a problem in the breathing? Do you suffer with the coughing or chest pain occasionally? Many person are coming to us, I see the tongue, और हम जानते हैं कि जो टंग का टिप होता है वो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, द टिप ऑफ द टंग डूइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट। तो अगर टिप के टंग पर आपने देखा ये ब्लैक ब्लैक निशान है, ब्लैक साइन इज द साइन ऑफ energy is not flowing. Then I ask, do you have chest pain? Many patients told, yes, I have chest pain. It looks like very young, only 26, 27 years. Yes, occasionally I'm having chest pain. So I'm not telling these patients, oh, you are having heart problem, because हर पेशेंट का सिर्फ डराना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट बी टेल। दिक्कत सबसे पहले वहां आती है यूरोजेनाइटल पे। So we are telling the patient, okay, you have some energy stuck in the chest region, we have to flow it. हम पेशेंट को डराना जरूरी नहीं है कि भैया तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, हो गई है। एट द एज ऑफ 26 it become very, it's not good to make it, but tell the patient, see, if you are having family history of the heart problem, if your chest energy is stuck, then after many years you might suffer with a high blood pressure or some heart problem. So please start doing something right now, अभी से चालू कर दो। You improve your lifestyle, your food habits, right? आप पहले से थोड़ा सा सचेत तो करिए, पेशेंट सचेत करना जरूरी है, otherwise what is the meaning of to take this history? So have you noticed any change in the bowel habits or the urine output? क्या पेट साफ होता है कि नहीं होता? यूरिन ठीक से निकलता है कि नहीं निकलता? Whether you are constipated or not, whether urine coming out properly or not. Okay, do you experience any dizziness, fainting or balance problem? Do you smoke, drink alcohol or any other drugs, taking other drugs? Are you, if the female patient and you, sometimes we see the female patient and look like pregnant, so we can ask, okay, are you having pregnancy or are you breastfeeding mother? Okay, is there any family history of any medical condition? Ask this question. So this question will give you very wonderful idea about each and every patient. तो हर बार जब आप ट्रीटमेंट करोगे ना, ऐसा मेरे साथ पहले होता था। शुरुआत में क्या हुआ कि आई यूज्ड टू गो इन माय क्लिनिक 2 or 3 days in my clinic. Some other doctors working on the other day. Every time I go and ask her, okay, you have BP, you have diabetic. After third time, I feel same week. Every time I'm asking, okay, same patient I'm asking. Patient told doctor, I told you already last week that I'm having BP. Then I thought, yeah, it's really very bad.
to ask the same thing again and again. Then I start doing this. Okay. So there is a one file. In the file, there is a page of the patient. Okay. If you are not giving file to patient, okay, make one file only. In that file, that patient, तो जब भी वो पेशेंट अच्छा अच्छा जरा उसका उसका पेपर लेके आओ, तो उसका पेपर आई विल सी क्विकली ओ दिस हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, दिस इमीडिएटली everything is in my mind. I don't have to ask again and again, right? You know, आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाओ उसे कितना अच्छा लगता है. Do you know that? किसी पेशेंट को किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाओ, कविता जी कैसे हैं, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगता है. ऐसे ही बिकॉज पेशेंट फील गुड इफ यू रिमेंबर समथिंग अबाउट हिम. ओके, आप हर बार ऐसे बिहेव करो स्ट्रेंजर से पहली बार देख रहे हो उसे एंड आपने उसकी यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, देन पेशेंट इज नॉट हैविंग, patient feel that you are not having like too much a care for him. लेकिन आप हर बार ध्यान रखो, अरे कैसा है भी आपका, है ना, उसका नाम लेके बोलो, he will feel very good, right? और you should aware with this problem. Okay, तो ये हमारी, तो हमने पहले स्टार्ट किया पेशेंट इंफॉर्मेशन से, और फिर हमने ये सारी एडिशनल क्वेश्चन पूछे. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पेज. पेशेंट नेम, आज मुझे ट्रीटमेंट करना है टुडे 13 मई. पेशेंट नेम, आज अभी राइट नाउ क्विकली आई एम मेजरिंग द ब्लड प्रेशर 130/90, पल्स रेट मे बी 76 पर मिनट. ओके, डेट ऑफ कफिंग और अदर ट्रीटमेंट, आज की मैंने डेट डाल दी 13 मई. विच कपिंग आई एम डूइंग, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और कपिंग मसाज, एंड कलर ऑफ द मार्क्स, मैंने जो कपिंग की उसके मार्क्स कैसे थे. एंड इफ आई एम डूइंग वेट कपिंग देन अमाउंट ऑफ द ब्लड, कितना ब्लड मैंने निकाला, एनी अदर थिंग इफ आई वांट टू नोट डाउन दिस. सो दिस इज द, ये मेरा एक पेज है, आज की डेट लिखी मैंने. द सेम पेशेंट कमिंग नेक्स्ट टाइम, सो अगेन आई विल मेजर दिस एंड आई विल राइट. सो पेशेंट नेम, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, डेट ऑफ कपिंग. तो यहाँ पे मैं फिर से डेट लिखूंगा. सो आई हैव गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ 13 मई, देन आई एम गिविंग ट्रीटमेंट 17 मई or maybe 20 May, then I'm giving treatment to the 27 May. So in this way, we can make small paragraphs, small columns in one page to maintain the, every time we have to measure the blood pressure or the pulse rate. अगर आपको blood pressure और pulse rate नहीं आता तो आप सीखिए. 9 वैसे तो आता ही होगा, 70% लोगों को तो आता है, 30% लोगों को नहीं आता. तो by the electric instrument, but never believe electric instrument 100%. आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट भी बाय कर सकते हैं जिस पर आप 100% भरोसा मत करिएगा. 100% भरोसा किस पे कर सकते हैं, मैनुअल, राइट, मैनुअल वन. इलेक्ट्रिक वन, ओके, इट्स नियर बाय. सो वेन एवर यू आर मेजर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक, मेजर 3 times. अगर आप मैनुअल करते हैं वंडरफुल. अगर आप इलेक्ट्रिक से नापते हो तो 3 बार नापिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक का हमेशा ऊपर नीचे आता है. समटाइम पेशेंट गेट स्कैर्ड. एक पेशेंट ने इलेक्ट्रिक से नापा, उसका बीपी दिखा 160/100, घबरा गया, डॉक्टर के पास भागा, मेरे पास ही आया, मैंने मेजर किया तो 120/80. तो अपना बीपी मशीन ही लेके आया, तो मैंने उसके बीपी मशीन से फिर नापा, तो उसके मशीन में 160/100 है ना, फिर नापा, सो 200/120. मैंने कहा फेंक दे इसको भी. 200 किसी का बीपी दिखा दे तो पेशेंट को नहीं बीपी हो तो बीपी हो जाएगा थोड़ी देर, है ना. इट्स अफेक्टिंग साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट, है ना. अब एक पेशेंट को, द वन पेशेंट सफर विद द एब्डोमिनल पेन, और एक डॉक्टर के पास गया, उसने एक रिपोर्ट की सोनोग्राफी और उसे डिक्लेयर कर दिया यू आर हैविंग लिवर कैंसर. पेशेंट वाज इन द टेंशन फॉर 6 months, 6 months, and start taking aloe vera, start taking गिलोय, नीम एंड whatever. 6 महीने के बाद वापस रिपोर्ट करी तो कहा कुछ नहीं है यार, फैटी लिवर है, फैटी लिवर ग्रेड 1 है. तो 6 महीने वो टेंशन में रहा. तो कभी कभी ऐसी डायग्नोसिस होती है भाई, तो जरा बच के रहना, और आप भी मत करना ऐसी. ओके, so in this way, and finally we will make this page also. In this page what we can do,
हम इस पेज में क्या कर सकते हैं कि हम कि कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सपोज वी आर डूइंग कपिंग, we can mark the area. Okay, I'm doing cupping here, I'm doing cupping. I use this chart for two purpose. मैं इस चार्ट का प्रयोग दो पर्पज के लिए करते हैं। द पर्पज नंबर वन, हम पेशेंट को दे देते हैं, बोलते हैं भैया तेरे को जहां जहां दर्द है इस पर निशान लगा दे, तेरे को जहां जहां प्रॉब्लम है इस पर निशान लगा दे, गोला बना दे, है ना। पेशेंट खुद अपने हाथ से गोला बनाता है, राइट। पेशेंट इज वेरी हैप्पी। अच्छा, कई बार तो हम ये भी करते हैं कि एक मेरिडियन का चार्ट हमारे, एक पहले, अभी तो नहीं है मेरे पास, एक पहले मेरा कंसल्टिंग था, उसमें मैंने मेरिडियन का चार्ट बनाया था। पेशेंट बोलता था डॉक्टर साहब यही स्टमक में ही प्रॉब्लम है, स्टमक 36 लगा इसी में प्रॉब्लम है, यही दर्द है। पेशेंट मुझे खुद पता था, ओ यस 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 ये UV57, दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। तो पेशेंट खुद ही बता देता था कि कहाँ तकलीफ है, पेशेंट को समझ में आ जाता था। यस, एंड यू कैन पुट द मेरिडियन चार्ट इन योर क्लिनिक फॉर श्योर। आप मेरिडियन के चार्ट अपने क्लिनिक में लगाइए, अच्छी गुड क्वालिटी, राइट। तो इससे एक अच्छा होगा। और पेशेंट जब फ्री होगा ना, देखता रहेगा ऐसे, तो उसको जहां तकलीफ है वहां वो देखेगा। यस, फिर वो नंबर देखेगा उस पॉइंट का, बोलेगा यही प्रॉब्लम है मुझे, है ना, यही तकलीफ दर्द है। फिर वो उसको बता दो, देखो आपको यहाँ प्रॉब्लम है, ये लाइन मेरिडियन कैसे आ रहा है, हम आपको यहाँ ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन always tell the patients. If you put the meridian chart, it's really very good. If you are not putting meridian chart, then what will do patient in your clinic? He will keep watching WhatsApp or some YouTube shorts, right? Instead of that, you can put the meridian chart. He will see the meridian chart. तो मेरिडियन चार्ट भी एक क्या काम करेंगे, एक रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगे आपके, जो पेशेंट को कन्विंस कर रहा है ना, दैट इज कन्विंसिंग अ पेशेंट दैट ओके आई हैव पेन हियर एंड। तो अब जब पेशेंट को थोड़ा सा बिलीव हो जाता है कि यानी, यू नो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द पेशेंट माइंड, पेशेंट को ये लगना चाहिए कि उसे जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई, है ना। वट एवर ही इज सफरिंग विद, डॉक्टर अंडरस्टूड। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दिस, when patient is coming to you, he is telling something and you are telling something different. Patient is still not able to understand whether this doctor understood that what problem I have, इसको पता भी है कि नहीं है। Okay, sometimes patient might do, if patient is very intellectual। अब एक patient था, वो उस टेढ़ा था, टेढ़ा तिरछा, दो पेशेंट, एक पेशेंट के कंधा ऊपर नीचे, एक पेशेंट का, जब मैंने, बिकॉज इन माई क्लिनिक व्हेन पेशेंट कम, मैं पेशेंट को लिटा देता हूँ, दोनों उसके पैर भी नापता हूँ कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। तो पेशेंट वाज कमिश्नर। तो बोलता है, मैंने कहा सर आपका एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे है। अब भैया वो तो कमिश्नर है, ऐसा तो सबको होता है, एवरीवन इज हैविंग लाइक दैट। ओके, फिर मैंने कहा आपका एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, राइट। तो मैंने कहा कि आपका राइट पैर छोटा है, कहना सबका ही होता है वो तो, एवरीवन इज हैविंग लाइक दैट। तो मैंने चार लोगों को लिटा दिया, चलो लेट जाओ, सबका नापा, देखो इनका है, इनका है, इनका लेफ्ट छोटा है, इसका बराबर है। देन ओके, देन रियलाइज, यस। नहीं तो जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल पेशेंट होते हैं ना, वो ज्यादा आपको क्वेश्चन करते हैं, इसलिए लिखना नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि एक हमारे स्टूडेंट ने अपने क्लिनिक में क्या लिखा था, कीप योर चप्पल एंड गूगल नॉलेज आउटसाइड। आपकी चप्पल को और गूगल की नॉलेज को बाहर रख के आओ। सो इट्स गुड, ओके, इफ यू डू दिस, क्योंकि पेशेंट आपके सामने आधा डॉक्टर है ना, फाइन। और एक्यूपंक्चर डॉक्टर से तो और भी क्वेश्चन करता है, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता, फिर तो पेशेंट बस, यू डॉक्टर आपको सुना है एक बीमारी का नाम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस? डॉक्टर मुझे HLA-B27 पॉजिटिव है, आपने नाम सुना है? नहीं, क्या होता है? बस फिर तो पेशेंट आपके सिर पे बैठ गया। तो भाई ऐसा मत करिएगा, थोड़ा एनाटॉमी पढ़ते रहिए, है ना, थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ते रहिए। ओके,
So in this way, tell the patient, okay, mark this area, I'm having ear problems, I'm having eye problem, I'm having nose problem, वो mark कर देगा सारा, right? तो जब वो mark करेगा ना, इससे बड़ा फायदा मिलेगा कि जब whenever you are coming next time to treat your patient, जब आप next time patient treat, आप भी चार्ट देखोगे, क्योंकि कई बार मैं जब क्लिनिक जाता हूँ, पेशेंट लाइन डाउन, तो मैं अपने रिसेप्शनिस्ट को लाता हूँ, यार इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम, धीरे से, बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन 2 ट्रीटमेंट अर्लियर, अभी मुझे ध्यान नहीं है, ये कुछ वीक्स पहले दिया था, तो इसको सर नी पेन है, ओके ओके, देन आई एम ओ नी पेन इज मेमोराइज्ड. Initially, now I'm not doing like that, but initially I keep on doing like this, है ना, उसको क्या प्रॉब्लम. So in this way, maintaining the proper history and data, it's really very beneficial, so that you can always do the right treatment. आप हमेशा एक सही ट्रीटमेंट कर सकें. So in this way, we have to fill this condition. तो इतना हमारा, ये हमें कंसल्टेशन, आप लोग बनाइए अपना पेपर, उसमें अच्छे आपके सेंटर का नाम लिखिए. यू कैन पुट द योर सेंटर लोगो हियर समवेयर, पुट योर नेम हियर, आपका नाम लिखिए, आपकी आपकी जो जो अचीव डिग्रीज हैं, जो पेशेंट को इम्प्रेस करने वाली हैं, वो सब लिखिए, और ये सारा लिखिए, राइट, ये सब लिखिए. और इसके बाद फाइनली दिस पेपर यू कैन ऐड मोर इमेजेस हियर, और या इस तरह का फॉर्मेट आप किसी को दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि कीपिंग this format in your mind, please make my very good consultation paper. Okay, आप ऐसा भी कर सकते हो, you can also do this in one page. You can put some point like LI4 good for headache, आप LI4 का नाम लिख दो, LI4 good for headache, pericardium 6 good for acidity. Okay, इस तरह से कुछ 4-5 डिसीज जो वेरी कॉमन डिसीज, तो पेशेंट ऐसे से दबाता रहेगा जब एसिडिटी होगी, ऐसे दबाता रहेगा जब एसिडिटी होगी, जब उसको सिर दर्द होगा. द वेरी कॉमन, यू सिलेक्ट द वेरी कॉमन 7 to 8 पॉइंट्स और अपनी कंसल्टेशन पेज में डाल दो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ टू डू दैट. छोटे छोटे इमेज डाल दो, LI4 की लोकेशन गुड फॉर हेडेक, पेरिकार्डियम 6 गुड फॉर एसिडिटी. ओके, इन दिस वे स्टमक 36 गुड फॉर नी पेन, आपने डाल दिया. लिवर 3 गुड फॉर लिवर एंड एंगर. तो सबको गुस्सा तो आता ही है आजकल. सो इन दिस वे जस्ट मेक वेरी इंप्रेसिव पेपर. तो पेपर वो पेशेंट उसे संभाल के भी रखेगा, खोएगा नहीं, बिकॉज उसमें आपकी इंफॉर्मेशन, मे बी यू आर इन्वेस्टिंग दिस नॉलेज, यू आर यूजिंग 2 पेजेस, आप 2 पेज का प्रयोग कर रहे हैं, बट पेशेंट विल कीप दिस प्रिस्क्रिप्शन वेरी नाइसली विद देम. उसके लिए वो बड़ा संभाल के रखेगा, है ना. योर, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी डिसीज बहुत कॉमन है, किस किस डिसीज का नाम लिख सकते हैं. नंबर 1 हेडेक, एसिडिटी, नी पेन, व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक, टेल, बताइए. यू कैन also unmute yourself and tell the name. वेरी कॉमन डिसीज. अब ये मत बोलना कि वो चिकन गुनिया, इंसोम्निया, परफेक्ट, इंसोम्निया, है ना. इंसोम्निया के लिए आप बुधा ट्रायंगल बना दो, बुधा ट्रायंगल बना दो. बुधा ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, 1, 2 and 3. हार्ट 7, लंग 9 एंड पेरिकार्डियम 6. जैसे बुधा ट्रायंगल बना दो, का वेरी गुड फॉर स्ट्रेस एंड इंसोम्निया, राइट. आपको नींद नहीं आती है सर मैंने ये ट्राई किया, बुद्धा ट्रायंगल बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. अब पेशेंट कविता जी की क्लिनिक में आया, कविता जी ने उसको एक चार्ट दे दिया और पेशेंट ने वो ट्रीटमेंट अपने घर पे किया, तो अरे वाह, सी इज वेरी गुड एक्यूपंक्चरिस्ट. कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रिपल वार्मर 6 का एक दे दो कि कीप ऑन ट्रिपल वार्मर 6 कॉन्स्टिपेशन. ओके, स्ट्रेस के लिए बुधा ट्रायंगल की हमने बात कर ली. माइग्रेन हेडेक के लिए आप UV62 का प्रयोग कर सकते हैं. UV62 इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट फॉर माइग्रेन हेडेक, यूरिनरी ब्लैडर 62. मैम सर बुद्धा ट्रायंगल पे अगर लोग नीडलिंग नहीं कराना चाहते, जैसे रिस्ट पे बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाली बात है, तो फिर कलर या फिर मैग्नेट से बताएं प्लीज. जब हम कंसल्टेशन पेज में लिख रहे हैं तो हम सिर्फ बोल रहे हैं डू एक्यूप्रेशर ऑन ईच पॉइंट 30 सेकंड to 1 minute, ये लिख दो बस.
ठीक है मटर सर। का दाना भी लगा सकते हैं, मटर का दाना। Patient will Sir, be getting- keeping methi is giving a very good, excellent result. Even if the BP is getting reduced. Yes, perfect. Methi is giving very good result. अब हाई ब्लड मटर का प्रेशर दाना के सर, लिए मटर का दाना। मटर दाना लगा दो। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप लिख दो LI11, LI11 ना सर? LI11 and heart 3 trace the two together। एक ऐसी एल्बो की इमेज बना दो और अपने कंसल्टेशन पेज में चिपका दो। हार्ट 3 किसके लिए बोला सर? इतना गजब का पॉइंट है LI11 and heart 3। मैंने कई लोगों का 30 second high blood pressure will go down within Yes, 30। इमीडिएट कम होता है सर। मैंने कई लोगों का किया इससे। इवन मेरा भी कभी लगा तो तुरंत डाउन हो जाता है सर। तुरंत डाउन होगा within 30 seconds। यस सर। High blood pressure, one hand, one finger on the LI11, other finger on the heart 3, press release, press release, press release। 1 मिनट में तो बीपी कम कम। सर बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती है। बुधा ट्रायंगल वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट। लाल वाला कैसे ना आएगा? और गैस के लिए बुधा ट्रायंगल में अगर एक्यूपंक्चर करना है तो सब सेडेशन में जाएगा, क्या करें? या डेफिनेटली अगर किसी को लो बीपी नहीं है ग्रीन, पर्पल, येलो। सर बुद्धा ट्रायंगल एक हाथ पे देना चाहिए, दोनों पे? वन हैंड इज इनफ। नहीं, आप स्टूडेंट तो मैं टीचर। एक हाथ में काफी है। आज एक हाथ बुधा ट्रायंगल तो करते करते ही कब नींद आ जाती है मालूम नहीं। yes नहीं, regarding the tennis elbow, okay, tennis elbow is not actually, we are targeting the problem which is in every home. Tennis elbow is a problem but not in every home. BP, we can see BP, we can see chakkar, giddiness and headache, दोनों का एक ही पॉइंट है, that is urinary bladder 62। excellent result। यूरिनरी ब्लडर 62 पर एक मेथी का दाना लगा दिया, बीपी में और गिडीनेस में एक मेथी के दाने से फायदा। सर स्किन एलर्जी के लिए बोलिए ना। देखो स्किन एलर्जीज के लिए पॉइंट तो बहुत है, लेकिन स्किन एलर्जी पानी से हुई है। नहीं, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अभी हाँ जी। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, बट नो नीड टू राइट इन द कंसल्टेशन पेज, बिकॉज़ इन द कंसल्टेशन पेज वी हैव टू राइट द डिसीज। सर मैंने LI11, लिवर 3 और स्प्लीन 6 लगाया था। हाँ यस गुड। लेकिन आप अगर ये स्किन एलर्जी भी डालेंगे, टेनिस एल्बो डालेंगे, तो फिर तो वो आपका पूरी बुक बन जाएगी, राइट। हमें तो सिर्फ एक सर पेज में लिखना है, जैसे हमने हेडेक लिख दिया, हाई बीपी लिख दिया, चक्कर गिडीनेस लिख दिया, वी हैव रिटन इन दिस वे यू हैव टू मेक द योर कंसल्टेशन पेपर। सर आप बताइए ना स्किन एलर्जी के लिए। स्किन एलर्जी के लिए द पॉइंट बिलो द डार्विन ट्यूबरकल इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट। विच वन सर, वंस अगेन? ये जो डार्विन ट्यूबरकल होता है ना कान में, हाँ जी हाँ जी। इसके नीचे जो एक है ना जो खड्डा, इसका फुट हाँ फोसा हाँ का हाँ जी। excellent point for skin allergies। Sir, that is sympathetic, sir. Auricular आप- सर sympathetic. यूरिनरी बर्निंग, यूरिन बर्निंग के लिए देखो अगर आपको I will tell you, then if you want to work on the UTI, it's a different condition. But urinary burning के लिए the single point is you have to apply 2 points. Then you have to go for protocols, right? देखो I will tell you, I will suggest you some disease you need more points. Like if you want to work on the urinary burning, you have to add at least urinary bladder 63 and 66. 66 is the water point. So don't write this here. क्योंकि यहाँ पर अगर ये सब लिखोगे, कंसल्टेशन पेज का मतलब है कि 2 पेज योर सर कोल्ड कॉफ तो लिख देना चाहिए, क्योंकि कोल्ड कॉफ तो घर घर में। कफ कोल्ड के लिए आप लिख सकते हो, ये हमारे ये जो लंग एरिया है ना, इसका निशान हाँ। बना कफ कोल्ड के लिए। नहीं तो LU11 इज ऑल्सो गुड सर, है ना? LU11 is good, but in the consultation paper we have to write very easy thing. हाँ, Face this area for cough and cold. अगर ये सब लिखेंगे तो सर वो लोग हमारा पेपर भी संभाल के रखेंगे। पेपर सर संभाल मैं के परसों ना I will suggest you select disease, any 8 disease as per your own very आहे common बैठी disease, है और उनको लिख दो इमेज के साथ। आपका consultation एक बहुत ही है। सुंदर बन जाएगा, right? ठीक। Sir, for tennis elbow, please guide, no? Frozen shoulder and tennis elbow, what point will help? Golfer's elbow, Tennis elbow, no need to write. But I will tell you, if you want to work on the tennis elbow, but what is the tennis elbow? Number one, I will tell you, हे खाई आते देखो टेनिस एल्बो को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेनिस एल्बो
is the disease, but not very common. इतनी common नहीं है. टेनिस एल्बो मतलब lateral epicondylitis है ना. अब किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. टेनिस नहीं सर, एल्बो लिखने के लिए नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि टेनिस एल्बो के पूछना है लिए. तो हम आपको कबिंग में सिखाएंगे, है ना. लेकिन अभी हमारा जो बात है, टेनिस एल्बो को ठीक करना है आपको. सो यू फाइंड आउट द मेरिडियन, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्वॉल्व मेरिडियन इज ट्रिपल बॉर्मर एंड एलाई. ट्रिपल बॉर्मर एंड एलाई, राइट. I will tell you, if the person is having problem with the triple bordmer and align, then you can go on the other elbow at the same location, treat the pericardium and lungs. जहां पर दर्द इस हाथ में, अपोजिट हैंड में चले जाइए और लंग्स और पेरिकार्डियम को ठीक करिए. लंग्स एंड पेरिकार्डियम को ठीक And करिए. for SI elbow, For SI, small intestine. small intestine, you can go for the heart meridian. But I will tell you, as per the TCM concept, मतलब उसके कपल लेने का है सर दूसरे हैंड में. Right now we are discussing the osteopathy. In the osteopathy, we are learning all the connections. Number one, liver. Liver is getting some imbalance. Then it's affecting your diaphragm. Then diaphragm is affecting your lungs. Lungs is affecting your this upper part. And this effect is reflecting in the form of tennis elbow. The person is suffering with the tennis elbow might have some liver problems. Okay. Why I'm telling you this? Because one day because I already, as per the theoretical explanation, the tennis elbow is connected with the lungs, tennis elbow connected with the liver problems. What is the name of tennis elbow? Tennis elbow is called lateral epicondylitis. यहाँ पर हमारी जो ये हड्डी है, ह्यूमरस बोन जिसे हम बोलते हैं, इसका ये lateral epicondyl होता है. यहाँ पर दर्द होता है और यहाँ से जो मसल अटैच होती है उनमें दर्द होता है, right? Now, so we have to treat the liver. By treating the liver, we can work. One day I was giving the treatment of liver. I was just keeping the hand on liver. Then person start getting pain in the elbow. I thought I am treating the liver. Why this person is start getting the liver elbow pain? मतलब मैं उसके liver को treatment दे रहा था, हाथ रख के, और उसको elbow में दर्द चालू हो गया. Even then I realized, oh, theoretically it's already given that tennis elbow is having connection with the liver. So this person might be having some liver problem. Then I treated the liver only, liver, the tennis elbow disappeared. उसका tennis elbow कुछ दिनों में, कुछ weeks में, after 7 treatment disappeared. So what I want to tell you, for temporary, you can treat the, just problem is here, you will treat here, and you will see the very good results. But you want to treat this patient very nicely, then also treat the liver meridian, like the liver 2, liver 3, and some work on the liver, remove the stagnation of the liver, work on the liver chi stagnation to treat the tennis elbow successfully. Now, please come back and please do not ask the question which is connected with the various protocol, because we have to go. This is the, in the cupping therapy, we will put the cups from here to here. Cupping therapy में हम पूरे कप को यहाँ से आने डालेंगे. बहुत डिटेल क्वेश्चन है. लेकिन I will tell you, please don't write tennis elbow in your prescription page because it's not very common. Okay. जैसे अभी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आए हैं तो उनको ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहे हैं. वो बोलते हैं डॉक्टर से पता नहीं कुछ गलती हुई है, क्या हुआ है, और वो पूरा मतलब आगे झुक गए हैं. जो खफुसिस आपने सिखाया, वो वाला सिंड्रोम, तो सर एक्चुअली वो बिल्कुल डिप्रेस हो गए, होपलेस हो गए हैं. तो सर उनको कैसे हम मतलब वो कर सकते हैं, और क्या ये जो ऑपरेशन हुआ है उस पे कपिंग वगैरह, वो तो हम समझेंगे ना. Okay, sir. That we are going to work, because step by step we are working, because I will go step by step. Suppose I have already made the presentation, I will send you. मतलब मैं अभी आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ. So that मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए लिख सकते हैं. मतलब थोड़ा उनको कैसे पॉजिटिवनेस आए. एक मिनट आपको बताता हूँ. देखिए, ये हमारी 1 मिनट प्लीज 1 मिनट. ये हमारी नेक की मसल है, स्प्लिनियस कैपिटस.
Then these are the muscle splenius cervicis. तो हमारी सर फिर हमारी ये स्केलेनी, हमें इन सब मसल पर एक एक करके, ये पूरी स्पाइन की मसल है। आप देखिए दिस प्रेजेंटेशन ऑलरेडी रेडी, जस्ट आई हैव टू डिस्कस विद यू। मुझे आपसे ये डिस्कस करना है, मैं एक एक करके जाऊंगा। आप देखिए मैं सिलेबस में मैंने सब लिखा है, मैं एक एक करके जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जाने से मजा आएगा। अगर मैं अभी एकदम से आपको टेनिस एल्बो, शोल्डर, है ना, फिर गर्दन, तो सीक्वेंस में मजा नहीं आएगा। लेट मी गो फर्स्ट स्पाइन, చూడు ఎలా హడతారా arm, ఎలా then ఇలా go to legs. మొత్తం తిరుగుతాను In the కవిత syllabus చందన I have mentioned that Sir, we are going to discuss each and everything right. सर आप जो बोल रहे थे ना 8 पॉइंट लिखने हैं जो पेपर में, 8 वो पॉइंट, बता दीजिए बस। जैसे आप बताइए हमने कौन कौन से 8 पॉइंट सिलेक्ट किए। नंबर 1 है, बुद्धा ट्रायंगल लिया। देखिए नंबर 1 हमने हेडेक के लिए LI4, वेरी कॉमन डिजीज है, LI4 हो गया। फिर हमने कहा एसिडिटी के लिए पेरिकार्डियम 6, ओके। नी पेन के लिए आप ले सकते हैं स्टमक 36, नॉट ओनली नी पेन एंड इंडाइजेशन के लिए हम 36 पर मॉक्सा भी कर सकते हैं या एक्यूप्रेशर। पेशेंट को तो एक्यूप्रेशर ही करना है। नी पेन एंड इंडाइजेशन हमने लिख लिया स्टमक 36, ओके। फिर हमने कहा बुधा ट्रायंगल, बुधा ट्रायंगल मींस नी पेन के लिए SI1 भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है जो आपने सिखाया। इसके लिए नी पेन, इवन हाँ, ये एल्बो ब्रेन या, के लिए भी SI1 मिरेकल, यस ओनली 1.3। या आप वो भी लिख सकते हैं, SI1 इज गुड फॉर नी पेन। सो बुधा ट्रायंगल सर फॉर SI3 इज आल्सो गुड ना, उसको लगा के घुमा दे तो। लेकिन नेक पेन हाँ इट्स गुड, बट माइट बी पेशेंट इफ यू थिंक द पेशेंट कैन एबल टू डू दैट। सर मैंने किया था एक को, पेशेंट कर लेगा। हाँ जी ठीक हो गया उनको। नहीं आपने नीडल लगाई थी। हाँ नीडल लगाई थी सर। हाँ लेकिन आपकी कंसल्टेशन पेपर में है, हमें सिर्फ एक्यूप्रेशर के पॉइंट लिखना है, नीडल वाले पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि पेशेंट नहीं कर। हाँ जी ठीक है जी। स्ट्रेस एंड स्लीप के लिए बुधा ट्रायंगल हो गया आपका। और कौन सी प्रॉब्लम्स जो कॉमन है बताइए अदर देन दिस। स्टिफनेस, frozen shoulder. Sir, UTI. Constipation. You Sir, actually many people who are working, they get this frozen shoulder and back pain, sir. Sir, UTI. कॉन्स्टिपेशन, ट्रिपल बार्मर 6, UTI. UTI के लिए आप डाल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर 63 एंड Cold and cough, sir. 66। Cold and cough. हाँ कफ कोल्ड के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए आप पूरा ये बैक पेन ऑल्सो, पूरा लंग एरिया बना सकते हैं। सर बैक पेन ऑल्सो। फिर गिडीनेस वर्टिगो, मतलब गिडीनेस ये, और बोलेंगे हम क्या, गिडीनेस के लिए अपना UV62 also work for headache. Giddiness. Migraine is also same, na? Migraine is already came like LI4 and is migraine is common. तो हमारा UV62 माइग्रेन पर भी काम करेगा, सेम पॉइंट यू कैन राइट। स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस और बॉडी स्टिफनेस, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, एक पॉइंट नहीं हो सकता उसका, दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया। लाइक someone is having stiffness in the upper back, middle back, lower back, calf muscle, और hand stiffness, shoulder stiffness, तो उसके लिए क्या होगा कि we have to write many points. So right now just we are writing the problem. Patient is looking, oh I am having headache, LI4, or I am a giddiness, UV62, acidity, pericarditis, वो दबा सके। मैंने UV63 और 66 UTI के लिख तो जरूर दिए हैं, लेकिन ये पेशेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है कि पेशेंट के लिए ढूंढने डिफिकल्ट है। आप ही समझो कि अभी मैं आपको बोलूं UV63 66, आपको लोकेशन ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो पेशेंट को तो कितनी होगी। जस्ट थिंक इन दैट वे। अच्छा सर्वाइकल और में क्या देंगे। रिमेंबर वन थिंग, जरूरी नहीं है कि आप बॉडी के पॉइंट डालें, आप सुजोग की उंगलियां बना के उसके भी पॉइंट लिख सकते हैं। कितनी बीमारी हो गई हमारी। सर हो गए 8 हो गए, बस इतना काफी है। यस सर। और आपको जो लगे वो सर unconsciousness तो पेशेंट आएंगे। yes that is also kidney 1,
किडनी 1 एंड आपका गवर्निंग वेसल 26 फॉर इमरजेंसी एंड अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, ये जरूर लिखिएगा। सर आजकल थकान बहुत लगती है बहुत लोगों को। थकान लगती है तो या थकान लगती है तो उनको बोलिए कि इफ यू आर गेटिंग वेरी मच टायर्ड तो रोज क्या करिए, नेवल में ऑयल डालिए, है ना, उस पर एक नेवल का फोटो बनाकर और नेवल ऑयलिंग करें, ठीक है, एक नाभि का फोटो। हम थकान के लिए करते हैं, फॉर द टायर्डनेस वी आर डूइंग CV6, CV12, स्टमक 36, मॉक्सिवेशन, बट पेशेंट कांट डू दैट, पेशेंट नहीं कर पाएगा। सर अनकॉन्शियसनेस GB26 देखा मैंने, अनकॉन्शियसनेस एंड इमरजेंसी किडनी 1 गवर्निंग वेसल 26। Okay, sir. Thank you. Sir, for diabetic, is there any other emergency point? Sprain की बात मैं करूँ तो sprain depends on which part. Like someone is having sprain in the lower back, ankle sprain, neck sprain. So sprain become very big area, means so single point we can't write for sprain, right? Sir, for diabetic emergency, is there any emergency point? For diabetes emergency, Yes. what? No, nothing like it. Nothing like that. Okay. अगर for next Regular what we are doing. for next पे sprain Leuzen point For any type of emergency, आप लिख सकते हैं for any type of K1 GB26. प्रेस जिंगवेल पॉइंट और उंगलियों के निशान बना दीजिए, ये कर सकते हैं। so for next sprain Leuzen point, विच पॉइंट? Leuzen पेशेंट को कहाँ समझाओगे आप लियोजोन और कहाँ, मतलब, लेकिन आपकी बात सच है, आई एम एग्री विद यू, दिस इज गुड पॉइंट। कुछ तो अपने लिए बचा के रखना है ना, तो पेशेंट को बता देना क्या है ना, फिर पेशेंट को थोड़ी एक्यूपंक्चर पढ़ाना है अपने को। okay सर क्लास थोड़ी रहेगा। तो आपका तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब अगली बार, डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं है, जरा पॉइंट भेज देना तो मैं खुद ही ट्रीट कर लूंगा। ऐसा मत करिए भाई, कुछ अपने लिए बचा के रखना है, राइट? ओके, तो आई विल टेल यू मेनी अदर थिंग। और आप अगर जैसे आप चाहते हैं कि एक पॉइंट है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया के लिए ये ट्रैगस को प्रेस करिए, ट्रैगस है ना हमारे कान का, प्रेस, ये आप डाल सकते हैं, प्रेस ट्रैगस, ट्रैगस इज आल्सो ट्रैगस, TREGS। so bleeding from injury stop करने के लिए एक point है ना, है स्प्लीन 1, लेकिन आपको नहीं डालना है, okay क्योंकि ब्लीडिंग पेशेंट ऐसी डिसीज नहीं डालना है, okay क्योंकि ब्लीडिंग कम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो ना ब्लीडिंग का कारण क्या है। फिर okay पेशेंट बोलेगा हमने तो आपके को, मतलब ऐसी डिसीज डाली है जो आसान हो, सिर दर्द भैया आसान है, ठीक हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसिडिटी ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं होगी तो भैया तूने ज्यादा मिर्ची मसाला खाया होगा। अब आप ब्लीडिंग वगैरह ऐसी प्रॉब्लम अगर आप लिखोगे ना, जो अगर ज्यादा हो गई तो इट माइट बी लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसी भी मत लिखिए, है ना। आपको पता, हमें पता है कि स्प्लीन 1 इज गुड पॉइंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, राइट? ओके सर हमारे खुद के सर लिए स्वेलिंग के लिए स्वेलिंग इसलिए और भी डाल सकते हैं आप, मेमोरी के लिए डाल सकते हैं, बच्चों के लिए मेमोरी के लिए, अब आप मेमोरी के लिए डाल सकते हैं। मेमोरी के लिए फिर आपको एक कान का फोटो बनाना होगा और कान में हिप्पोकैम्पस का फोटो डालना, हिप्पोकैम्पस एरिया, जानते हैं हिप्पोकैम्पस कहाँ होता है? एनीवन नोज? मेमोरी के लिए इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट, हिप्पोकैम्पस। चलो इसको क्या मैं आपको दिखाऊं? हाँ, Here sir point. यू नो, please. सो दिस इज अ वेरी गुड, जस्ट एक कान का फोटो बना दो और इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मेमोरी, हिप्पोकैम्पस। लेट्स सी दिस, पापा ठीक है, ये पॉइंट है हिप्पोकैम्पस। सब बड़े भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? बड़े बच्चों को भी बड़ों को भी सब लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़ों को भी लगा सकते हैं। और स्वेलिंग के लिए, फीट स्वेलिंग के लिए फिर आपको स्प्लीन 9 इज गुड पॉइंट फॉर फीट स्वेलिंग, बट आई डोंट रिकमेंड यू लाइक दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर अब प्रॉब्लम, अब हमें ऐसी चीज को हमें पहले डायग्नोसिस करना होगा, फिर ट्रीटमेंट करना होगा। नहीं, आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद स्वेलिंग नहीं जा रही है।
तो वो एक डिसीज है, वो हमें ट्रीट करना है. अच्छा Something we have to treat. Everything patient can't treat. ओके We सर have हाइपर एक्टिव रेडिएशन पॉइंट सर hyper. नहीं मैं ही करूंगी ना Hyperactive. उसको, या मैं ही करूंगी, घर में है तो उसको कौन से पॉइंट दूं? वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो हम कंसल्टेशन पेपर की बात कर रहे हैं. ओके ओके यस सरोज जी. सर हाइपर एक्टिव रेडिएशन पॉइंट इन चिल्ड्रन सर. Yeah, so reduce the Hyperactive. hyperactivity. Yeah, so definitely we have to take the help of few more points. Just one point is not enough, right? To calm down the hyperactivity. Sir, liver 2, See, liver 3 will do, sir. yeah, definitely it might do, but I don't think like you should write it. You can write liver 3 good for fatty liver and anger. You can write this because fatty liver is very common. Sir, Liver, but for the all- hyperactivity, we have to treat the patient. We can't tell the patient treat yourself, right? Sir, lymphedema. Yeah. The 7-8 points are No, more I than think Lymphedema. common disease are over. Sir, please 1 second, sir. I will tell you one thing. Commonly, we can put the main points for any diseases like stomach 36, liver 3, K1, and H7, CV6. Like this, if we treated in between all the points, if any particular diseases, it will give more effect, no, sir? Yeah, That's the definitely. main points. But sir, K1 is not recommended in low BP, right? K1. Yeah. Actually, kidney 1, what is the kidney 1? Kidney 1 is the point Wind point. Yeah, kidney 1 is reducing the BP, that is true. If you press the kidney 1, it will reduce the BP, right? In the prescription paper, we have to write very, very common disease. Very common. हमें एक भी ऐसी disease नहीं लिखना है जो बहुत अनकॉमन है, क्योंकि फिर हमें ट्रीट करना है पेशेंट को, राइट? सो इनफ फॉर टुडे, आज के दिन इतना काफी है. कल हम स्पाइन की मसल्स के बारे में बात करेंगे. Yes, tomorrow we'll discuss the muscles of the spine and how to perform the cupping. Thank you so much. See you tomorrow. Closing the session.